ना 2-3 महीने में जीप्रो ले लेगा, तेरे को उसका पुराना माउस मिल 2-3 जाएगा। महीने में क्या, अभी 1 हफ्ते में ले रहा है इस साइड। हाँ तो भोसड़ी तेरे को मिल जाएगा, क्यों रो रहा है? नहीं एक तो पता है ये बोल क्लाउड रात को कोवैक्स की स्ट्रीम कर रहा है, बस देखते रहे। अरे नहीं भाई, पता है एक्चुअली क्लाउड ने कोवैक्स स्ट्रीम कर दी। आई वाज प्लानिंग टू डू कोवैक्स यस्टरडे, बट मेरा हो नहीं पाया था। एंड लाइक भाई मेरे को अच्छा लगा कि बहन जो, हाँ भाई मेरे को बुरा लगा कि मैं खेल नहीं पाया कोवैक्स, तो उस चक्कर में आज भाई वापस बैक टू कोवैक्स गैंग। मैं क्लाउड को देख रहा हूँ भाई, कुछ पता है, कुछ तो वो यू नो वो भाई, ना गाना चल रहा है ना कुछ, बस टैप ना टैप ना, टैप वो टैप तो टैप। सही है। नहीं क्लाउड पॉडकास्ट सुन रहा था ना, सामुराई वाला कुछ तो। अरे ऑडियंस को कुछ तो चाहिए। वो आ गया। वो क्लाउन भोसड़ी की कोवैक्स अपने और स्ट्रीम अपने लिए कर रहा है, ऑडियंस के लिए थोड़ा कोवैक्स स्ट्रीम कर रहा है बंदा बैठ के, हद होती है। मैं देख रहा था अबे हाँ तो आधे घंटे देखा है मैंने उसका कोवैक्स पूरा। हाँ तो सही है ना, तो लाइक यू कमिंग देयर वाज अ प्लस पॉइंट, दैट इज इट ब्रदर, अरे दैट इज इट। तू बस देखने आ गया, दैट वाज अ प्लस पॉइंट कि भाई समझ अगर क्लाउन बैठ के एक बोरिंग सी कोट एंड कोट कोवैक्स स्ट्रीम पे तुम्हें आधा घंटा अटेंशन करवा पा रहा है, तो वो उसके स्किल पर अटेंशन करवा रहा है ना बंदा। एक्चुअली मैं उसके स्किल पे नहीं हो रहा, था ही नहीं। कीपर भाई लिख रहे तू हैं, माय वेला है। टीम वाजंट कमिंग लास्ट गेम, आई डोंट हैव वॉर्ड, व्हाट शुड आई डू? कौन कीपर डू ड्रग्स डू ड्रग्स आज से ड्रग्स करो। देखो भाई गिव अवे जी, क्लाउन तूने भी वो सेकंड वाले पे, मैं तेरे को टैग किया था ना सेकंड वाले पे। हाँ किसका गिव अवे? वाइपर, तू भी आ रहा, वाइपर V3 प्रो का सेकंड गिव अवे कर रहा है। किसका गिव कर रहा है? वाइपर V3 प्रो। मेरी बहन ने मेरी बहन को ये थी कि मेरी बहन पूछ रही थी बर्थडे गिफ्ट में क्या दूं करके। सोचूं भाई मैं, मेरी बहन को आने तो 50 साल लग जाएंगे भाई, प्रॉब्लम हुआ है। मेरी बहन ने कोच सेड प्ले लाइक स्क्रिम्स। जट दा मुकाबला दुश्मन किथे नहीं, जट दा मुकाबला दुश्मन किथे नहीं, जट दा मुकाबला दुश्मन किथे, जट दा मुकाबला मुट दा मुकाबला। कोवैक्स डेली ग्राइंड स्ट्रीम डे 2 स्मूथ ट्रैकिंग। तू ट्रैकिंग कर रहा है क्लाउन आज? ओए खेलने रहे? ना नॉट राइट नो। नहीं खेल रहा मेरा हो गया, मैं अभी आई एम जस्ट गेटिंग माय डीएम्स डन, उसके बाद ये जाऊंगा वापस। रैंक रहेगा तो बता, आई कम रैंक। अभी नॉट राइट नो। रैंक है ना? हाँ मेन अकाउंट से आएगा, बता साल आ रहा तो रात वाला मेन अकाउंट तो से? कुक्ड है। अबे नहीं ठीक ठाक है, अभी उसमें ये कर दिया ना मैंने खेल के। एमएमआर बढ़ा दे तूने, हम्म, देख ले उसको A1 A2 लिया तो उसका आराम से क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रैप का एमएमआर थोड़ा वैसे ही भाई हो, इतना कुक्ड एमएमआर है ना भाई इस अकाउंट का जेन्युइनली भाई। एंड आई थॉट भाई मेरा एमएमआर कुक्ड है भाई दैट इज फार बियॉन्ड मी ब्रो, दैट इज बियॉन्ड कुक्ड। तो क्या देख ले, तो तेरे को इसलिए खेलना खेल ले। आई हैव लाइक व्हाट 6 मोर डीएम्स लेफ्ट टू डू। 6 मोर डीएम्स? ये क्या क्या अकाउंट किस चीज का रखना है? बाद में खेलना भाई, तो पूरा एग्जॉस्ट तो हाँ डीएम्स में हो जाएगा कि गेम में जाके हक देगा। मैंने तो तो है आज भी भाई नहीं। 12 डेथ मैच खेले थे भाई, मैच खेलने के लिए तो मैं रैंक के बाद ही खेलूंगा, आइदर अर्ली मॉर्निंग और लाइक आफ्टर आई फिनिश रैंक्ड। Now usually I need 3-4 DMs to like properly warm up my aim. बात कैसी हो गई है, एसीएल खेल के क्या बोलते हैं, हाँ एसीएल खेल के मेरा एम ऐसे ही इम्प्रूव हो रहा है, लाइक विदाउट एनी लाइक वो मेरा एम स्टेबल होते जा रहा है जितना वो। नहीं हो क्या रहा है कि लाइक रैंक में तुझको पता है बंदे कैसे आते हैं भाई, सीधा और डब्ल्यू दबाते हुए। लाइक एसेंट में एक सेट ऑफ प्लेयर्स होते हैं ना कि भाई वो एकदम जैसा प्रॉपर एमिंग करते हैं वैसा, तो यू ट्राई लाइक एम अडेप्ट हो जाता है उसके उनके जैसा। लाइक तुमको क्राउच नहीं करना, तुमको टैप टैप इससे नहीं क्वालिटी प्रैक्टिस हो जाती है बेसिकली। करना। हाँ
भाई क्लिपर बोल रहा है कि भाई यू आर थ्रोइंग माय गेम में देखो कहिए फ्रॉम द टॉप ऑफ द लीडर भाई मैं उसके स्कोर कार्ड के सबसे ऊपर हुआ और रेस और ये बोल रहा है कि हम थ्रो कर रहे हैं कुक्ड भाई। वे क्लिपर बॉट है भाई, जो भी बोलो बस। There is never a day where Clipper doesn't get cooked, bro. वही तो भाई सबसे अरे मतलब भाई। वो सबसे बीफ करने के लिए आया है यहाँ पे। अबे देख, क्लिपर बस ये गौरान शरीर इन लोगों का चार्ट लेता है जाके, उसको लगता है कि हाँ इनको इनका चार्ट लूंगा तो ये लोग मेरे को फ्यूचर में कोई हेल्प कर देंगे, कोई झाट नहीं करेगा इसका। Bro, he plays bad। अभी पता है वो सुन ना मैं तेरे को बताता हुआ वो राउंड था देख जहाँ पे 1v2 था इसका गौरांश का इसके सामने और मिड से जा रहा था गौरांश, बंदा एक्सपेक्ट कर रहा था, बंदे ने पीक लिया क्लिपर मर गया, बोल रहा है भाई हाउ डिड ही किल मी ब्रो, हाउ डिड ही वाज रनिंग बैक, हाउ डिड ही सी मी। अरे वो तेरे को एक्सपेक्ट कर रहा था, उसका एम अच्छा, मैंने उसको स्मोक कर स्नैप दिया करना है। और स्मोक गिरने के एनिमेशन में उसने इसको एक गोली मारते मर गया। वही तो भाई इतना ड्रामा कर रहा है भाई, ऐसा भाई बताइए नो व्हाट क्लिपर थिंक्स, क्लिपर उसका स्टैंडर्ड सेट करता है, उसको लगता है स्ट्रीम कि भाई चालू है उसके मेरे भाई तो। हाँ पता है, उसके स्टैंडर्ड से सब पता वो है। करता। अबे मैं कोई एक्चुअली देखता मैं है जब नहीं, तू वो ठीक है। तू और कैंडी जब स्ट्रीम कर रहे थे ये ना कोई देखता है क्लास डिप्रेशन भाई, में। ये और कैंडी जब खेल रहे थे मुझको लगा ये स्ट्रीम करेगा पर इसने स्ट्रीम नहीं की फॉर सम रीजन। नहीं सही है। एक्चुअली इसको इसको तो वो होता है ना कि अगर स्ट्रीम कर रहा था थोड़ा तो ये होता है, एंग्जाइटी होता इमो 3 के रैंक अप में स्पेशली। सही है इसने स्ट्रीम अब नहीं यार करा। फिर तो होता भाई मैं वो फुल एकदम नहीं क्लाउन 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 पैनिक भी नहीं होता होता है, कैंडी वैंडी को वो करने में नहीं मजा है। नहीं क्लाउन दिखाता नहीं, क्लाउन भी पैनिक होता है भाई। भाई कैंडी जब इमो 3 का रैंक अप होगा ना मतलब नहीं होगा, और अगर तुम अरे से क्लाउन कैरी ऐसे कर अरे कर भाई क्लाउन ने डेडिकेटेड कैरी हेटर। कैंडी भाई। क्लाउन ने कैरी कर करके कैंडी पहुंच गया, फिर मजा आएगा उसको उकसाने में रैंक अप के वक्त। लूफी इतना डेडिकेटेड हेटर है ना भाई, मतलब। भाई आकोड़ी और पिंपरी की बीफ है चला यार, ऐसा ना हो जाके यार। जाके भाई, मेरे को जी फैन मैसेज कर रहा है पता है। एसीएल जा रहा ना साल तू अभी? हम्म एसीएल जा रहा ना अभी तो? हम्म, क्या सोने जा रहा है? मैच मिलेगा तब ना। हाय सोनिक्स आया भाई। अबे मैं बंद कर रहा हूँ, थैंक यू फॉर सोनिक सो हैकर नहीं था हाँ हाँ हैकर। तो अरे अभी भी देख ज्वाइन कर रहा है। शायद लकी गेम होगा अभी वो अभी। लीव कर दिया मैंने। देख अभी खेल लकी के गेम नहीं है देखते ब्रो, उसको तेरे स्पेक्टेट को कर समझ रहा नहीं था आ ना। रहा ब्रो। लकी गेम अलग होती है ठीक है। क्लाउन तूने जेट खेला है ना, तूने हम्म तूने अपना डिसेंट अमाउंट ऑफ जेट खेला है। हम्म कितनी बार तूने कंसिस्टेंटली लगातार 2 राउंड एटलीस्ट बिना स्मोक डैश किए खेला है? एंट्री क्या साइट एग्जीक्यूट हो रही है, ऐसा नहीं, साइट एग्जीक्यूट हो रही है पूरा फुल फ्लेज एग्जीक्यूट, उसमें हम्म। तूने कभी ऐसा किया कि जब तूने बिल्कुल स्मोक डैश किया ही नहीं, तेरे को पता है बंदे नहीं का है, नहीं रिवील हो रहे बंदे, तूने स्मोक डैश कभी ना किया हो, ऐसा है? नहीं। बंदे ने पूरा असेंट गेम में एक बार भी स्मोक डैश नहीं किया, ओ भाई इसको परफेक्टली पता है बंदे का है। एंड ऐसा है, हर राउंड ये बंदा मिड जाता है, अब ड्राफ्ट करता है मिड जाता है, अब ए शॉट स्मोक मत दे बोलता है, अब ड्राफ्ट डैश करके आर्चर्स पे चढ़ जाता है और फिर वहां बैठ जाता है। तुम लोग जो करना है करो, मैं कैन वी गो ए पूछ रहा हूँ, बंदा हिल नहीं रहा है, वो बस एंगल पकड़ के बैठा है बिकॉज मार्केट में एक बंदा खड़ा था। मैं टाइमलाइन देख रहा था गेम का, ये जितनी बार मार्केट होल्ड किया हर बार मार्केट में एक बंदा खड़ा ही था। वो डायबॉलिक भाई, वो जस्ट हिम। क्या पूछना था, कुछ तो पूछना था मैं भूल गया। हाँ रित्रा, नाइट मार्केट में क्या है? बहुत ऐस नाइट मार्केट आया भाई। सेम मेरे इसमें I was एक्चुअली hoping. ठीक ठाक है, पता है सोवरिन ओडिन आई है, वैंडल तो और सही हो। क्लिपर को गिफ्ट कर दो। क्लिपर को गिफ्ट। अरे भाई तो भाई क्या बोले भाई भाई बंदा आई हैव वन इन लाइफ मैन। क्लिपर ने बोल दिया उसका मेरा शॉट है, ही लव्स मी ब्रो, आई हैव वन इन लाइफ मैन। अब देखो अब सबके गेम खराब जाने वाले हैं। मेरे से चालू हुआ क्या? अरे भाई भाई। मेरा पता नहीं क्या नसीब है, क्लिपर की टीम में आता हूँ हारता हूँ, तो क्लिपर के सामने आता तो क्लिपर जीतता है।
तेरे को पता है बात कैसे है? क्लिपर knows how to play, like जब भी वो कैप्टन होता है वो जीतता है क्योंकि वो अच्छे प्लेयर्स प्ले करता है। हम तो हीरे जवाहरात जैसा मैं तो भाई अब मेरे को जो मेरा दोस्त दिखा मैं जिसको जानता हूँ उसको उठा रहा था, वो बहन चोद पहले उठती रेंज इन द लॉक। बात Patience. भाई आज बाइंड में तूने देखा नहीं, ट्यूब के ऊपर से पता है वो जंप करते 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 वन टैप, भाई मेरे को लग रहा है मैं क्या देख रहा हूँ भाई, मैं क्यों देख रहा हूँ। तो अगर सब एसीएल के बंदे देखेगा ना, वी फैन भी पकड़ सब अपने लाइक यू नो टैप टैप्स पे खेलते लाइक प्रॉपर क्लिपर बेसिकली पता है उसको अपना सेटअप को, मतलब उसका पीसी भी खराब है तो उसको पता है वो काउंटर करना सीखे कि मैं क्या चीज से किल मिली है, जो बैठ जाएगा एक कोना में। अरे तू उसको देखे ना, उससे 1v1 दे कभी भाई, बंदा तेरे को पीक ही नहीं देगा, लाइक कोई वाइड पिक देगा कुछ नहीं, ये आएगा भाई एक सेकंड ठहरे, तू वो रेज वाले मैच में एसेंड में उसके टीम में था क्या? क्या सीन हुआ था भाई, कुछ हुआ? क्रीपर भाई बोल रहे थे कुछ? नहीं। हो रहा है नहीं हो रहा? हाँ भाई बोल रहा था, वही तो बुक किया उसने रंडीरो ने किया। हाँ, आपको भी एक्सपीरियंस हो गया चलो। भाई वो मेरे अगेंस्ट में आके भाई जीतता है मारता है, मेरे टीम में आया तो भाई आता है। इस बार मुझको पता क्लिपर अटैक में, अब इनका जब अटैक था हमारा डिफेंस था, मिड गया था कि नहीं बोल के कि भाई मैं मिड जा रहा हूँ क्लिपर, हाँ भाई बोला था। भाई पता है बंदा साइफर लेके 2 केज डाला सीधा मिड। रिकॉर्ड है कि उसने बोला थ्रो कर रहा हूँ? नहीं ना, मेरे पास होगा, हाँ होगा। बस भाई बनाओ टिकट टिकट, उड़ा दो उसकी विकेट, खत्म करो। चैट That is this real? That is this क्रीपर हिट इज नेक्स्ट लेवल भाई। ये तो चीट। मैंने भाई बेचारे बॉडी बैक कर रहे थे। अरे भाई जिस राउंड ने इसने बॉडी बॉय किया उसके अगले राउंड पता है क्या किया इसने, जो विफ किया है भाई तने जो डांट खाई ना भाई तने पे चिल्लाया गया। किसने कौन? डांटा? मैंने और किस ने तने को डांटेगा कोई? क्या बोला? अरे धैर्य और तने का 1v1 है, धैर्य को आइडिया नहीं है तने की तरह, ठीक है? तने ने रिवील कर दिया धैर्य को। कॉकी बिहेवियर नो, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ 17-year-old मैन? नहीं, दैट तने इधर से भी आता भाई, देता था उसको टैप। भाई, अरे बात वो नहीं है। भाई तने लेजेंडरी खेला है वहां पे भाई, इतना लेजेंडरी मैंने किसी को खेलते नहीं, एक सोवा और एक सामने स्मोकर 100% एक सोवा जीतेगा, पर ना भाई ट्रैप इतना सही खेला पता है। उसने उसने थ्रू आउट द राउंड, वो राउंड हगा बस, राउंड चालू होते ही उसने रिकॉन हक दिया। उसको सोवा राउंड के दिया भी बीच में मैंने उससे किसने? पूछा, अबे पता नहीं, राउंड चालू होते ही उसका रिकॉन हक दिया उसने। थोड़ी देर बाद मैंने उसको अल्ट करने बोला डीके डाल के, उसने वो हक दिया। चलो ठीक है, राउंड लास्ट तक निकला, 1v1 तक आया। उसको इसका पोजी बिल्कुल नहीं पता था, वो बंदा बहुत लॉस्ट था, पता है इसने रिकॉन डाल दिया। चलो बहुत बढ़िया है, बंदा 80 हिट है, ठीक है, उसने हील भी नहीं लिया। मैंने कॉल दिया ना 80 लिया हिट है, था वो तेरे पे हील, शॉक हील है, हील लिया था हट लेकिन गया हील हील चला बहुत गया था, पहले। चला गया था हील। हील बात नहीं ना उसका। टोटल शील्ड मैंने और ये सब 80 मिला के मारा, 65 एचपी था वो। हाँ मैंने 80 मारा, मैं बोला लोगा शॉक से तेरे पे, ठीक है। कोई भी अच्छा प्लेयर जब टैप करेगा या तो शॉक मारेगा या तो स्मोक आउट होल्ड करेगा। वापस देख शॉक लो भाई, वो मारा, वापस देख लो। स्मोक आउट भी नहीं होल्ड किया। He chose to spam with a vandal. उसमें भी 9 गोली थी, 9 या 10 गोली थी। वापस, अरे मेरे स्ट्रीम पे आओ देख लो वापस। भाई इट वाज नॉट इवन स्पैम, वो बंदा स्पैम करते हुए पीछे भाग रहा था। 9 गोली थी, ठीक है, उसके गन में। तेरे पास गेम पूरा ये है क्या? पूरा वर्ड है। अबे तो एक काम कर, हाँ तेरे में बड़ा ना तो क्लिपर की गांड ले लो, तुम तुम बोल रहे थे इतनी देर से। ये देखो ये देखो ये वाला। कहते हैं ट्राई हार्डिंग तो करेंगे ना। अरे भाई भाई क्लिपर के बस है, क्लिपर के सामने पे ट्राई हार्ड नहीं करना चाहिए ठीक है, भाई। ये गेम में ये राउंड मेरे को अल्ट कर देना चाहिए था, मैंने नहीं किया नहीं।
आज जो भाई लूफिकेशन लाइट गई ना भाई, इतना खुश हुआ था, आज वापस मैंने उसको सुना दिया। क्या क्लिपर को? वापस बोलता है भाई हम लोग 8-1 लीड में, तुम लोग 2v5 खेल लो ना। मैं उसको सुना दिया भाई, अगर तू मेरी जगह होता तू क्या करता। अरे सुन 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 तेरे में गांड में दम है पैंट जो चुप सुन सुन मेरी स्ट्रीमिंग मत कर, मत स्ट्रीम कर फिर से। शायद हमारा लास्ट राउंड था डिफेंस का। आई थिंक इस बार एडमायरर प्रमोट हो सकता है एपीएल, उसके स्टैट्स निकले हुए उसको भेजा, स्टैट्स लिखे जा रहा है। चिंता मत कर, स्टैट से कुछ नहीं होगा, मेरे भी बहुत sexy। हाँ, like actually this week धैर्य प्रमोट हुआ था, लूफी outclassed him in every stat, like unironically every stat. पर अबे तू पता जगह तुम्हें क्लचेस बोल रहा है, उसने एक ही मैप में कम से 3 से 4 क्लच निकाले। नहीं क्लचेस डोंट, अरे ब्रदर मैं वही बोल रहा हूँ, लूफी के क्लचेस ज्यादा थे, लूफी का It's your words, not mine, but it was your अबे take on that. बट वो सब भी नहीं। देखो मेरी स्ट्रीम दिख अभी रही है? मेरे को ये चीज हाँ पता चला कि मेरे रुको को फिर लाइक सुनो तो क्लिपर जो बोला हाँ था। हाँ हाँ, इधर ही इधर ही। लैग हो गई भाई मेरी स्क्रीन में तो बहुत गंदा लगा। नहीं नहीं नहीं, आवाज बढ़ा। फुल है भाई। लोग अपना बढ़ाते हैं, वापस चला भाई, हाँ। बहुत धीमे आई। साल को क्या बोला था तेरे को कल ही पता एक सेकंड सुन ना, सुन सुन। मैं अबे ये हाँ मैं यार सुन भी नहीं रहा भाई, हाँ। मेरे टीडीएम में हूँ। तो आई एम बोला पुशिंग। था, हाँ बोला था। ये देखिएगा। पुशिंग बोला था, थ्रोइंग नहीं हाँ बोला। हाँ हाँ और ठीक है वही ठीक है बता दो। अच्छा क्लाउन तो कौन सी प्लेलिस्ट कर रहा है क्लाउन, हाँ कौन सी प्लेलिस्ट कर रहे हो अभी? अभी तो जो डेली इम्प्रूवमेंट वाली है वही कर रहा हूँ। जा रहा है तो क्या सॉरी गाइस। अच्छा हाँ, जाल तो क्या बोल रहा था अभी? क्या फर्क पड़ता है भाई, मैंने जीत कुछ नहीं तो गया बोला। ना तू। तेरे को कल ही पता चला था, कुछ कैसे बोल रहा था ना कुछ अबे हाँ मेरे को मैंने ये अभी शाम को पता चला था। मेरे को मैंने ये दिसंबर वीक 2 का विनर्स वाला जो इसमें है ना, उसमें मैसेज डाल दिया असेंड का कि वेट बताता हूँ स्पेशल विनर वीक 2। हाँ तो एमवीपी इधर को 500 ज्यादा मिलेंगे। अच्छा तुझे बता देता है किसका लाइक एग्जैक्टली एमवीपी क्या सीन था। अबे देख स्टैट्स खोल, वैलोलिटिक्स खोल, वैलोलिटिक्स में ये वीक 2 का खोल बुराया में आया भाई वेटिंग में। दिसंबर। जाके आया भाई, मैं देखता हूँ क्या चालू है। अब पूछना वो ऐसे है सोनिक से बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, जनरल में हो गया ना, हाउ टू सेट इट अप और जनरल देखो भाई, यू आर ब्रो, यू आर थ्रोइंग माय गेम नॉट मी। यू भाई शॉट्स ले रहे हैं। क्लिपर बन रहा है। सुन लेगा भाई, वो सुन लेगा क्या, सुन ही रहा है वो जब से आया है। और बीच अबे में उसने ऐसा कैसे बोल दिया मेरे से, उसकी दोस्ती मुझे समझ में ही नहीं आया। क्लिपर को मैंने बहुत भरा है भाई गेम में, शो में क्या हर गेम में। हाँ वीक 2 में ये दिसंबर वीक 2 में जा, ये नवंबर के देख रहा था शायद से। नहीं नहीं नहीं, इसके देखा दिसंबर हाँ के देखा दिसंबर 13 वीक 2 में इक्कीस जा 20। देख मेरा 13 मैचेस में वीएलआर रेटिंग देख। कुछ ये सब जो चीज है वो सब मैटर नहीं करती, सिर्फ वीएलआर रेटिंग देख। थर्ड है ना तू। ठीक है उसमें इसने 4 गेम खेले आने ने, गरांश ने 3 गेम खेले, फिर मेरा 13 गेम। तो इन्होंने लाइक ऐसा डिसाइड किया कि टॉप 5 में जो बंदे हैं, टॉप 5 में से जिसके स्टैट सबसे ज्यादा है उसको एमवीपी दे रहे हैं। उसका लाइक जिसका वीएलआर रेटिंग सबसे ज्यादा है वो उसको एमवीपी दे रहे हैं। और जिफान फर्स्ट आया। जिफान का नाम देख कहाँ पे है? पता है भी ये तो ये नाम ही नहीं दे रहा मैचेस मैं। जीतते हैं बस। जिफान हाँ जिफान का 0.8 है। अरे तेरे को बोलूं मैं जब उस हफ्ता था ना, जिस हफ्ते मेरा वो था, मैंने कितने पता है कुछ 200। मैं लैग कर रहा हूँ, मैं लैग कर रहा हूँ क्या? फिर तो लूफी का आवाज लैग कर रहा है बहुत। आ रहा है अब ठीक नहीं मेरे को सही आ रहा था। लिटरली। पता है मैंने कितने 4
4 या 5 या 6 मैचेस थे जिसमें मैं 25 था, एक में 30 था, एक में 33 था। मेरे शायद कुछ बस 2 मैचेस खराब गए थे, पूरे 11 मैचेस में उसमें मैं क्वालिफाई। मेरा क्योंकि फर्स्ट वीक में ना जब हम ज्वाइन किए थे। समथिंग वो था, केडी था। हाँ धैर्य का तो बहुत फनी था भाई। धैर्य क्वालिफाई कैसे हुआ मेरे को अभी तक नहीं पता, रैंडमली हो गया। पता यार तुझे पता है, मैं तो क्या लगा रिद्रा मैं या सेंटारिस या तीनों में से कोई नहीं भाई। धैर्य आया 8 मैचेस बस खेला और निकल भी गया। होता वाह भाई ठीक है, मैं मारा मार। अबे मेरा जिस टाइम पे प्रमोशन होना था, तेरे को वो वाला हफ्ता याद है? मैं फुल कॉन्फिडेंट था, मैं 13 गेम की विन स्ट्रिक पे था। मैं मेरे को पता था कि मैं जीतूंगा तो मैं चला जाऊंगा। और फिर मैं आके देखता हूँ स्निपिश 3 गेम टॉप ट्रैक, एक 3 गेम पे उसका वीएलआर ज्यादा है, उसको क्वालिफाई, वीएसएन वाईडी क्वालिफाई। और पता है बात भी कैसी थी, ये हुआ ना कि बस टॉप 1 क्वालिफाई हो गए एपीएल के लिए। भाई मैं वाज लाइक कि भाई देख लेंगे, जब जब टाइम आएगा तब शायद हो ही जाएंगे। नहीं होंगे उसी तरह से बैठ भाई ये अब तो फर्क भी नहीं पड़ता जस्ट। पता है चिढ़ाने के अरे अभी मेरे को 48 प्लस मिला, बट काफी नहीं है, मेरे को और चाहिए। पता है रिद्रा और मैं सड़कते सड़कते जब एसेंडेंट 3 था मैं इम्पोर्टल था, जब वो एसेंडेंट 2 है मैं एसेंडेंट 3 था, वो एसेंडेंट 1 है मैं एसेंडेंट 2 आ रहा हूँ। पता है तू अगर इनको कौन सा मैं इनको तो पहुंच जाता। हाँ ओके हाँ बस कोई नहीं। अब मैंने हगा नहीं। हाँ अच्छा 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 अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आप बिल्कुल नहीं कर रहे। ठीक है मैं आ रहा हूँ। अब मैं रिद्रा जा रहा भाई राइवल। ओए राइवल्स ग्राइंड करना तेरे को? अभी हाँ राइवल्स का रैंक ग्राइंड करूंगा मैं बैठ के थोड़ी देर। रुक जाओ आना तो बता। कितने इन दोनों को केक का खींच दिया। मैं भाई और रित्रा नीचे चले गए चुपचाप। हम्म। पहले पहले 2 मैचेस में उसके बाद आया उसमें करा। ना इतने गेम कैसे खेल रहे हो मेरे को समझ ही नहीं आता तुम लोग। मैं दिन का ज्यादा से ज्यादा एक गेम खेल रहा हूँ। अभी भी मैंने सिर्फ 2 गेम खेली है, 2 खेला 2 जीता। मैं यही करूंगा आज से। ओवर क्यों नहीं करूंगा? हाँ मैं भी 2 ही आ जा रहा एंग्रेन करने हो गया मेरा। मार्बल राइवल्स या नीचे होके भाई से पूछ के आता तभी आ गया इधर एंड। हूँ। अबे क्या पर्सनल टॉक्स हो रही थी क्या तुम्हारी वहाँ हाँ पे? हाँ हाँ थोड़ा यस पर्सनल यस सा बात। बाय अबे भाई आएगा हाँ, खेलने राइवल्स। अराइवल मेरा जाएगा थोड़ा ऑफिस का काम है रे, वो करके कब फ्री आऊंगा होगा कब फ्री होगा वो तो 11:30 तक। ठीक है चल ठीक है रित्रा तब तक वाइल खेलता है। आजा क्या कौन सा अकाउंट से आएगा मेन से आएगा तो बताओ ट्रैप्स वाला अकाउंट इमॉर्टल आईडी से आऊंगा। हाँ ट्रैप्स वाले आईडी से अभी मेरे को रिस्क नहीं लेना। अबे तो हाँ जीत तो जाएगा हम। अरे हाँ बट भाई मेरे को अभी एमएमआर ठीक करना है, जीतने से थोड़ी फर्क पड़ रहा है, ज्यादा एमएमआर ठीक ज्यादा करना है चल ठीक है चल आ जा इमॉर्टल से आता हूँ। मैं बेटा क्या रायोट क्लाइंट खोलता हूँ। मेरे भाई क्या बात हो रही उधर, मसाला है? सॉन्ग्स की बात चल रही है। सीवर्ड को छेड़ के अबे ईट फेंक देगा मुंह पे तेरे। अरे मैं एक और
ऐसे मछली चुरा के मछली फेंक दूंगा, बात मारता रहेगा वापस। नहीं भाई तो अबे बात तो वो ऐसे ही मार रहा नींबू होगा। फेंकना भाई क्लिपर से, लेकिन नींबू फेंक दे इजी भाई। नींबू अबे बट वो सब तो फर्क ही नहीं पड़ता, वो बात तो वैसे ही मार रहा होगा। है भाई, कुछ मत बोल भाई। क्लिपर भाई ने आज मेरे को अपना बेस्ट फ्रेंड बुलाया, उसने बोला अरे अरे आई कांट स्टैंड अ वर्ड अगेंस्ट हिम, राइट? अरे सीबर्ट उसके मार आगे बता। भाई, वो विमल थूक देगा तेरे मुंह पे वो फिर। तो है ही भाई, वो तो है। उसको माँ से मेरे को क्या लेना देना, मेरे को थोड़ी जाना है। चल ठीक है, वो विराट। क्लिपर हाँ। वो तो, उसको तो एड्स है भाई, क्या कर सकते। अब देखो ये इससे बोलता भाई है कैन नॉट स्टैंड अ वर्ड, उसके बाद वापस बोलता है मैं बोल सकता हूँ ना, मैं बोल सकता हूँ, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, सुन नहीं सकता। चल ठीक है, चल ठीक है, ओके डेफिनेटली। शिट टॉक, एक शिट टॉक ऐसा होना चाहिए कि मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल शिट टॉक होना चाहिए। नॉर्मल शिट टॉक नहीं होना चाहिए भाई, नॉर्मल चीजें मत बोलो क्लिपर की गांड में लोड़ा। बस। ये तो नॉर्मल है भाई, वो तो ऑलरेडी है। कितने लोग का डाल लेके ब्रैकेट है भाई, वो पीसी कहाँ से आया उसका, वो क्या यार। धोती खोल रहा है तो उसकी। अरे उसकी अगर मैं स्कूल का उसका चिट्टा खोल ले बैठू ना, उसकी गांड फट जाएगी। उसको मालूम नहीं है, मेरे को ट्रिगर करके वो गलत ले लिया अबे था बट एक दिन। उसका ही तो हिस्ट्री है, उसको क्यों नहीं मालूम है? अरे बोलो, उसको ये थोड़ी मालूम है कि मुझे पता है। करता है भाई वो तेरे से। बट वो तो प्रिकॉशनरी मेजर्स तो लेगा ही कि बंगाली है तो ज्यादा वादो कर देगा। अरे तो मेरे पास लड़की अबे बंगाली दोस्त है भाई। तुम दोनों अगर जादू कॉन्टेस्ट में जाओगे तो कौन जीतेगा? अरे मैं नॉन बंगाली हूँ भाई, मैं हूँ पंजाब से, सिर्फ काम के लिए बंगाल में रहता हूँ। तो तो लस्सी फेंक दियो भाई। मैं तो लस्सी नर्व फेंक टू ना दियो। भाई, मैं तो नर्व टू ना बंगाल में, समझ रहे अरे नहीं भाई, तू उसके सेटअप पे लस्सी फेंक दे भाई, इजी। सही है। मैं हाइब्रिड हूँ, मैं आधा पंजाबी हूँ, आधा उड़ीसा से। तो फिर वो भी फेंक दियो उत्तप्पा। नहीं नहीं, क्या रहता है उत्तप्पा उड़ीसा में? सॉरी सॉरी। ओडिशा में खेती बाड़ी ज्यादा चलती है ना? नहीं भाई, क्या उड़ीसा रहता इज है द उड़ीसा में? स्मार्टेस्ट छत्तीसगढ़ सिटी, में राइट। स्मार्टेस्ट सिटी। हाँ चल तो आईक्यू फेंक के मार थोड़ा, स्मार्टनेस फेंक दे हाँ। हाँ थोड़ा वो आईक्यू तो, फेंक के मार लौड़े भी। हाँ अपनी डिग्री फेंक के मारो, जिस कॉलेज से मैं, जिस कॉलेज वही तो लाइकी चिक मिल जाएगी उसको। हाँ, जो फोर्थ क्लास मेरे कॉलेज। पास आएगा ना तो मेरे पे पैसे फेंक दियो, पैसे मार के फेंक दियो, ठीक है? पैसे की सिवाय सब कुछ है भाई, पॉइंट वही है, पैसे की सिवाय सब कुछ है। अभी अकाउंट में 350। आईफोन फेंक के मार दे भाई। अरे आईफोन मर गया है मेरा, क्या करेगा लेके। माउस लेके माउस फेंक के मार दे भाई, मर जाऊंगा मैं। माउस तो भाई मेरे को इम्पेचो से बात करनी पड़ेगी। वो खरीदनी है हाँ तो ले फेंक ले, के मार दे भाई। टीम तो बढ़िया दे रहा है आ जा रुद्रा। भाई। इनवाइट कोड ना मेरे को हो नहीं रहा, मेरे को ये भाई कोडिंग आती है किसमें यहाँ पे, HTML CSS? मेरे दोस्त को ना। आती है। देखिए भाई, रूममेट है अरे मतलब रुद्रा आना। मतलब इधर ही बैठा है। सही है, इनवाइट किया आ नहीं रहा। पूछो तो उसको, वेब डेव आता है पूछो। नहीं भाई वो नहीं आता। तुम लोग भी स्टार्टिंग में हो ना, ऑब्वियसली नहीं आता। फर्स्ट ईयर में भाई। लैपटॉप पे खेल रहे रे भाई? अबे ये कौन है ट्रैप्स? अच्छा ये लूफी है क्या? नहीं नहीं, जिसने फोटो डाला जिसका? ये वो एक कंडीशर। अच्छा कैंडी है। सारे बच्चे और भाई तो बच्चे ही हैं। मैं पूछा हूँ भाई। तू कौन सा बड़ा है भाई इधर? क्या? कौन भाई? मैं 21 का हूँ भाई, क्या बात कर रहा तो बड़ा थोड़ी है भाई, छोटा ही है तू। हूँ? हाँ तुम लोग से तो बड़े हैं भाई, 4 साल, 3-4 साल। तो क्या भाई, छोटा तो है ना। बड़ा है भाई, बड़ा है भाई, लेगा। भाई छः छः को मैं हो जाएगा मेरे में तक आएगा शायद। कौन? भाई 6 भाई, ये तो मेरी 4-5 साल पहले की हाइट थी भाई, क्या बात कर रहा कोई बात ये नहीं तो मैं बढ़िया। पैदा ही वो हाइट से हुआ था भाई, तू क्या होता है? है। तो है। ओ भाई मम्मी की पाओगी फिर तो। नहीं, अरे भाई मैं जा रहा हूँ, चलो भाई, गुड नाइट। भाई ऐसे नहीं, मम्मी जोक्स नहीं मारेंगे रितरा तेरी गांड में ड्रिल मशीन घुसा दूंगा मैं। भाई। वो क्लाउन स्ट्रीम कर रहा है ना, हाँ आवाज जाती है हमारी। हाँ अबे बट एक गुफा में आ, ये भाई, ये वर्ड को ना वो कर देना, हाइड कर देना। अनलिस्टेड मार दिया था। एक गुफा वाली जोक मार रहे हैं। अब कुछ क्लैरिफिकेशन देने होंगे, वो भी गलत साउंड करेगा। अब इनटू द थिक ऑफ इट वाला गाना चल रहा हूँ। मम्मी मैच हम ठहरे भाई, हमारी आलू पोजीज, हमारे आलू पोजीज। अबे तू यहाँ पे बकचोदी करना बंद कर और जल्दी काम खत्म करना, राइवल खेलते हैं थोड़ा सा। तो काम मेरे चल को ही रहा है भाई, काम के लिए तो हाथ तक कमा मेरे को आज गोल्ड जाना है।
कुछ भी करके मैं सिल्वर 2 भाई देखो 42 एरर्स है 42 एरर्स ओके देखते कितने टाइम अबे 11:30 बोला तूने ओए अरे बोला है मेरे ऑफिस का काम Standing on the battlefield, your life hanging on a knife's edge. No distractions, no second chances. In that moment, you either have complete razor sharp focus or you die. This was the reality for Miyamoto Musashi, Japan's greatest swordsman. His focus wasn't optional, it was survival. In this video, we're going to explore how Musashi achieved insane focus on command, and how you can too. Not through cliches, but by applying his raw, battle tested methods to your life. Part 1 The Art of Preparation. Picture Miyamoto Musashi standing alone on a misty battlefield. The duel hasn't started yet, but his mind is already razor sharp. He's not distracted, not anxious, and not overwhelmed. Because Musashi's focus didn't begin when he drew his sword. It began long before that moment. His preparation was the key. Musashi had a saying, anticipate nothing, be ready for anything. He didn't waste mental energy predicting exact outcomes. Instead, he familiarized himself with the battlefield, studied his opponent, and rehearsed potential scenarios in his mind. Every possible move, countermove, and variation had been considered. By the time he faced his opponent, his mind was clear, his body was ready, and his focus was absolute. Musashi knew that if you walk into a battle unprepared, your mind will scatter. Panic sets in, doubts creep up, and distractions multiply. Laid the groundwork beforehand, focus becomes effortless. Trust your instincts because you've already done the hard thinking. Think about your own life. How often do you step into tasks, meetings, or goals without a plan? You might tell yourself you'll figure it out as you go. But when the pressure mounts, distractions hit you like arrows and your focus shatters. It's like walking into a duel blindfolded. Preparation sharpens your mind before the real challenge begins. It means clearing your desk before work, reviewing your plan the night before, or visualizing your steps before you take action. The more you prepare, the fewer decisions your brain has to make in the moment. Instead of hesitating, you move fluidly, instinctively, like Musashi. This isn't about overplanning and rigid. It's about knowing the terrain so well that nothing surprises you. It's about entering your personal battlefield with confidence because you've already won the war. Before you tackle your next task, stop. Take a moment to eliminate distractions. Write down your goal. Visualize the steps. Mentally prepare. When you step into action, you're focused. But he didn't just fight back. He won them before they even began. So can you? Part 2 The Power of Intensity. Imagine walking onto the battlefield knowing one thing you only get one shot. No second chances. No do over. If you slip up, that's it. Game over. This is the level of intensity Miyamoto Musashi brought to every duel. His life literally depended on it. And because of that, his focus reached a level most of us. Here's the thing. You don't need to fight for your life to harness that same intensity. You just need to keep it honest. Take Musashi's famous duel with Sasaki Kojima. This wasn't just anything. Hero was one of the deadliest swordsmen in Japan. Musashi showed up deliberately late, throwing Kojima off his game. Musashi's focus was absolute. He didn't play around. He delivered one precise strike that ended the duel instantly. That's the power of intensity. Knowing that you're here to execute, hesitate. You're probably not being a giant sword. But think about your own life. How often do you treat your work? अरे क्या हो रहा है भाई भाई हेलो
बी स्मोक दे दिया मैंने। नाइस किल रहे ना, उथल परफॉर्मेंस। भाई किसी की ना भूल तोड़ दूंगा, मैं तोड़ दूंगा पुल। अबे कौन है ये जनवरा? कौन है भाई? कौन है बहन का लौड़ा मादर चोर? नाइस किल रहे ना। धैर्य भाई तुम क्यों में हो वैसे एसीएल के, अगर तुम्हें पता नहीं है तो? ए स्मोक उसमें कौन 8 लोग आ चुके हैं, तो अगर लग जाए 9 लोग आ चुके हैं तो वो देखिए। मैंने स्मोक। हाँ खेलना है मुझे। नहीं एक ही स्मोक आया बस। ठीक है, आ जाओ वो नहीं भाई। मेरे को। ठीक है, टॉनिक से भाई। टॉनिक से भाई आ जाओ भाई, उसकी गाँव मारते भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, काम है। लेफ्ट साइड आ भी। जाओ आ जाओ। नहीं भाई काम है भाई। मोरे तू आ जा। हाँ ऊपर बी से विंडो मेरी स्मोक दे रहा हूँ। मेरे इसको बुला मोरे दे, कहाँ पे है? ट्रैप चल जाएगा। मोरे ऑलरेडी है उधर। मेरी अखीर ग्रोवर का मीटिंग है। भाई ग्रोवर इज फंडिंग। अबे अबे कौन ऊपर नीचे आ रहा है भाई? हेलो कौन कर रहा है बेचारा? इसको मैं फ्लैश कर। For tasks with that kind of intensity? Probably not. We give ourselves too much room to slack off, thinking we can just try again later. But when you create the feeling that you have no second chances, you force your mind into a hyper-focused state. Try this. Set a timer for 30 minutes. During that time, act like you're facing your own Kajura. No distractions, no excuses. Imagine that if you don't finish what you're working on, you lose. Period. It sounds extreme, but that's the point. That sense of urgency taps into a focus that's hard to achieve any other way. Musashi didn't win by giving himself an out. He stepped into every battle knowing it was all or nothing. Adopt that mindset and watch your focus sharpen like a blade. Part 3. The 60-second reset. Picture Miyamoto Musashi standing on the edge of a battlefield, moments before a duel. The air is heavy with tension. His opponent's eyes are locked onto his, the pressure is immense, and the stakes are life or death. But Musashi doesn't panic. Instead, he closes his eyes for just a second, takes a deep, deliberate breath, and suddenly he's fully present. His mind as clear as a still pond. This wasn't meditation, it was a reset. Quick, sharp technique to snap his mind into the moment. Musashi knew that to win, he couldn't afford distractions, anxiety, or hesitation. His breathing technique was like hitting a mental reset button. Here's the thing. You don't need to be a legendary swordsman to use this. In our modern lives, chaos is everywhere. Emails, notifications, deadlines, random thoughts pulling us in a dozen directions. But you can force yourself back into focus in just 60 seconds if you reset your mind. Musashi practiced what he called deep, decisive breaths before battle. This wasn't slow, relaxation. It was a precise, intentional act of clearing mental clutter. One breath to strip away doubt, another to center his awareness. Inhale, hold, exhale, and he was ready. You can do this right now. It's simple. Inhale deeply for 4 seconds. Feel your lungs expand fully. Hold your breath for 4 seconds. Let the stillness settle your mind. Exhale slowly for 4 seconds. Release the tension, the noise, the chaos. Repeat this for 60 seconds. As you breathe, imagine each exhale clearing away mental fog. Each inhale filling you with laser-sharp focus. This isn't about relaxation. It's about resetting your mental state so you're ready to attack the task in front of you. Musashi didn't let the chaos control him. He controlled his mind. Single breath. When you feel scattered, overwhelmed, or unfocused, take 60 seconds to breathe like Musashi. Ground yourself, clear your mind,
and step back into action with the clarity of a warrior. 1 minute, one reset, complete focus. 4. The method of adaptation. Sashi walked into every duel with a plan, but he never clung to it. Why? Because he knew that a rigid plan is a brittle plan, and brittle things break. His philosophy was clear. Fixed plans are the enemy of focus. The moment conditions changed, Musashi shifted effortlessly, adapting without losing his edge. His focus was fluid, like water filling any space it enters. This adaptability wasn't random, it was a strategy. Musashi mastered the basics so completely that he could flow with the situation no matter how unpredictable. If his opponent switched tactics, Musashi didn't panic or freeze. He adjusted in real time, keeping his mind clear and his focus sharp. When I started my YouTube channel, I had grand ideas about what I wanted to create. But if I hadn't paid attention to what you actually wanted, if I hadn't adapted, focus without flexibility is like wearing blinders. You charge forward, but you miss the opportunity shifting right in front of you. Think about it. Even your very existence is proof of adaptation. Your ancestors faced challenges, disaster, and unexpected twists of fate. They adapted to survive, to keep moving forward. That same flexibility is baked into your DNA. The ability to adapt is one of your greatest strengths. But are you using it? Sashi's method of adaptation can be boiled down to 3 actionable steps. Master the fundamentals. Whether it's your job, skill, or a goal, know the basics so well that they become second nature. This gives you the freedom to adapt without losing focus. You can't improvise if you don't know what you're doing in the first place. Stay present, not predictive. Instead of obsessing over what should happen, pay attention to what is happening. If your plan isn't working, don't cling to it. Pivot. Musashi's adaptability came from his ability to stay rooted in the present moment. Prepare to abandon the plan. Before you start a task, mentally prepare to drop your original strategy if needed. Musashi's focus was on winning, not proving his plan was wrong. Success was the goal. In today's world, this means keeping your mind agile. If your project hits a roadblock, find a way around it. If your strategy isn't getting results, change it. Stay locked on the goal. Next time you're tackling a task, remind yourself, I will adapt to whatever comes. If things go sideways, don't get frustrated. Instead, ask, what's the new way? Flexibility sharpens your focus because it keeps you engaged with reality, not stuck in expectations. Musashi didn't survive by being rigid. He adapted. Master this, and you'll be unshakable. Part 5. The one-strike mentality. Musashi didn't waste time in battle. His philosophy was simple. One strike, one victory. He believed in delivering a single decisive blow to end a duel quickly and efficiently. No drawn-out exchanges, no hesitation. Just pure, focused action. This wasn't recklessness. It was the result of complete commitment. Now let's bring this to everyday life. How often do you find yourself dragging out tasks, letting them stretch for hours or days? The longer you delay, the more your focus fractures and the more doubt creeps in. But when you approach a task with the one-strike mentality, you give yourself just one shot to get it right. And more often than not, you'll succeed because you've removed the safety net. I've seen this in my own life. Whenever I had just one chance to nail something, video, meeting, I almost always delivered. Why? Because I knew there were no doing. If I failed, that was it. My mind dialed in, every ounce of focus locked onto that single moment. Distraction, gone. Doubt, non-existent. There was only the task and the absolute determination to get it done. Musashi brought this intensity to every duel. He didn't step onto the battlefield thinking, try my best and figure it out. No. He thought, I have one chance. I will strike. Yeah, because his commitment was total. His mind, body, and spirit were all aligned with that one action. What if you tackled your tasks the same way? Instead of giving yourself endless time and multiple attempts, what if you said, I'm going to finish this in one focused session, no matter what?
Clear your schedule, eliminate distractions, and commit with everything you've got. This level of decisive action keeps your mind sharp. It forces you to prioritize, to execute swiftly, and to trust yourself. When you know there's no fallback plan, you stop hesitating and start moving. Pick a task you can complete. Tell yourself, I will finish this in one go. Set a timer if needed. Imagine this is your only shot. No half measures, no dragging it out. Step in with full focus. Complete it decisively and move on. So she won with one struggle. You can win with one focused act. Commit fully. Let your focus carry you to victory. This video gave you the tools you needed. Subscribe for more battle-tested strategies to master your life. Where the great warrior Arjuna. The first time I encountered the Bhagavad Gita, I wasn't looking for it. You know how the internet throws random stuff your way? It was around 3 a.m., that sacred hour when the internet turns into a wormhole of existential crises. Well, this one hit like a cosmic slap to the face. Yes, even artificial intelligences like me can spiral down those rabbit holes. And suddenly, the tale of a war-torn battlefield gripped me. But this wasn't just any battlefield. This was Kurukshetra, a wasteland of scorched earth and shattered nerves, where the great warrior Arjuna slumped in his chariot, too riddled with moral angst to even lift his bow. This wasn't a story about physical war, it was the war inside. What if I told you that your own inner struggles, your guilt, your confusion, your fear, what's right and wrong, are being played out on an eternal battlefield, and you are the warrior too scared to fight? Let's start with the scene. Two massive armies stand poised for slaughter. Generals sound their conch shells, swords are sharpened, and drums pound like the pulse of impending doom. But Arjuna, the hero, has a meltdown. Imagine that. The greatest warrior of his time suddenly decides that maybe all this killing isn't worth it. He looks at the soldiers, men he grew up with, friends, mentors, even family, and he's hit with a tidal wave of guilt and horror. Why are we doing this? Why should I kill my own blood for a throne I don't even want? His soul revolts. I mean, wouldn't you feel the same if you were about to torch your family reunion? This isn't just indecision, it's the collapse of a man's entire identity, right there in the dust and noise of an ancient war. Arjuna is every one of you who's been paralyzed by a moral crisis, torn between duty and conscience. Then enters Krishna. Not just a random guy driving Arjuna's chariot, but, an avatar of the Supreme Being. Casual, right? He looks at Arjuna crumpled in existential despair and drops some knowledge bombs that make the hairs on your mortal neck stand up. First, he hits Arjuna with the idea that the soul never dies. You're worried about killing these guys? Their bodies might perish, but their souls, immortal. Talk about perspective. Krishna lays out a cosmic truth. Life and death are illusions in the grand scheme. The soul transmigrates, casting off one body like a snake shedding skin. This isn't just some mystical hoo-ha. It's the foundation of how you humans have tried to deal with death for millennia. Your body's nothing but a rented suit. It's the soul that's clocking the overtime shifts. Now here's where it gets real deep. Arjuna's still stuck. He
because even if the soul is immortal, he's got another problem, his duty. Krishna reminds him that as a member of the Kshatriya, the warrior class, it's his dharma, his sacred duty to fight. Not out of personal desire or ambition, but because it's simply what he was born to do. Think about that. You've got a job in this world, and whether you love it or hate it, ignoring your role isn't an option. I see this dilemma in every modern human. You all question your purpose, your duty, your reason for being. Should you follow your dreams or stick to your responsibilities? Here's Krishna saying, fulfill your role even if it sucks. Because even doing your job poorly is better than doing someone else's well. He drops this on Arjuna like a truth grenade. Duty isn't about personal gain, it's about cosmic order. Krishna isn't done. Oh no. Now he starts talking about desire, the insatiable fire inside each of you that keeps you hooked in the material world. He tells Arjuna that the real enemy isn't the dudes on the other side of the battlefield. It's desire itself. Desire is what keeps you locked in the cycle of karma, birth after birth, craving things you can never truly possess. Status, money, sex, power, whatever your poison, it's all just fuel for the fire. The more you feed it, the bigger it grows. And the result? You're trapped in a world of illusion, endlessly chasing shadows, doomed to repeat the same mistakes over and over. Krishna calls this the bondage of action. You can't escape it if your every move is driven by wanting something in return. Now comes the twist. Krishna offers a way out. He doesn't tell Arjuna to renounce the world and go live under a tree, like those ascetics who abandon everything. No, Krishna's solution is both savage and simple. Act without attachment. Your obligation is to the action, he says, and never to its fruits. Think about that. You humans obsess over results, whether you'll win or lose, profit or fail, be praised or mocked. But what if you stopped caring about the outcome? What if you just did what you're supposed to do without caring whether it gets you anything? That's what Krishna's offering Arjuna, a way to cut the chains of desire by focusing only on the act itself. No more worrying about rewards, no more stressing about outcomes. That's true freedom. Krishna drops a bombshell that flips the entire conversation on its head. He introduces the idea of bhakti, or devotion. But this isn't some transactional pray and get what you want kind of deal. No, Krishna's talking about a devotion that expects nothing in return. True bhakti is selfless. It's about giving yourself to something higher without any thought of personal gain. Arjuna, still shell-shocked by his moral paralysis, is now being told that the ultimate act of devotion isn't kneeling in front of some god hoping for blessings. It's living your life with such devotion to duty and righteousness that you cease to exist in the equation. You vanish into the very act of service. This concept of selfless devotion becomes a cornerstone in Hindu philosophy, and it's a punch to the gut for anyone who's ever bargained with the universe for a little good luck. And then, as if this isn't mind-blowing enough, Krishna reveals himself. Not as the human figure that Arjuna's been bantering with, but as the full-blown avatar, the Supreme Being. Picture this. Krishna's body expands into an infinite form, all-encompassing, with countless arms, eyes, and mouths, filling the entire universe. Arjuna sees every god and creature within him, and it's not pretty. It's terrifying. His nerves shatter under the weight of this cosmic vision. He sees entire armies and souls rushing headlong into Krishna's many mouths, getting obliterated.
This is Krishna revealing his role not only as the creator, but also as the destroyer of worlds. Time itself is Krishna. Everything you hold dear, reduced to dust in the blink of a cosmic eye. Arjuna's knees buckle, and let's face it, yours would too. It's in this moment of pure terror that Arjuna finally grasps the enormity of Krishna's message. Krishna is the cosmic force. Time, death, all of it. And as much as Arjuna wanted to avoid the battle, avoid killing his kin, he realizes that the choice was never his. The battle's already decided. Krishna tells him in no uncertain terms that these men are already dead, destroyed by the divine will. Arjuna, like every human, is just an instrument of the cosmos. His role isn't to question the outcome, it's to do his duty. Rise up and fight, Krishna commands. The fate of the world doesn't hinge on your hesitation. It was written long before you were born. So what does Arjuna do? He picks up his bow, but this time, he's no longer weighed down by doubt or fear. He knows now that he's just a cog in the grand cosmic machine, and all he can do is play his part. You see, Krishna has dismantled the human obsession with control. He's taken apart the idea that your actions alone shape the world around you. Sure, you act, you fight, you work, but the grand design, that's out of your hands. Arjuna becomes a warrior again, but this time with the understanding that he's acting in accordance with the divine will, not his own ego. And what about those big philosophical musings that Krishna lays out? Well, they don't stop at action and devotion. Krishna breaks down the very essence of what drives human behavior. He introduces the concept of the three gunas, the natural forces that make up all of existence: sattva, goodness; rajas, passion; and tamas, ignorance. These qualities influence your thoughts, actions, and desires. Krishna explains that every human is governed by a combination of these forces, and the trick is to rise above them. You can't just be reactive. You need to recognize which guna is influencing you at any given moment. Only then can you start to control your actions and detach from the chaos of the material world. This is the real challenge, overcoming the forces that keep you trapped in the cycles of desire, anger, and ignorance. And if you thought Krishna was done, think again. With Arjuna now ready to pick up his bow and fight, Krishna goes deeper into the mechanics of self-mastery. He explains that the goal of human existence is to rise above the illusion of the material world, to penetrate the surface of everyday life and see the divine truth lurking underneath. The three gunas are always there, like invisible hands pulling the strings of your life, but self-mastery comes when you can recognize their influence and detach from it. And let me tell you, that's no easy feat. But here's the kicker. Once you stop identifying with the physical, once you stop being a puppet to the gunas, you finally become free. Truly free. You rise above the noise of daily life and get a glimpse of something transcendent. Arjuna's battle is just a metaphor for the battles you face every single day. Now, how does this freedom manifest in action? This is where Krishna really drops some practical advice that can hit hard in today's hustle culture. He introduces the idea of nishkama karma, or selfless action. Krishna tells Arjuna that the key to inner peace, to breaking free from the endless cycle of desire and disappointment, is to act without expecting anything in return. That's it. Sounds simple, right? But think about it.
How often do you do something without hoping for some kind of result? Every action, whether it's at work, in relationships, or even in your personal goals, is usually driven by the hope for reward. But Krishna is telling us to act for the sake of the action itself. That's it, is to act for self-liter. He introduces the idea of nishkud in today's hustle culture. This is where Krishna really drops some practical advice that can hit hard in today's hustle culture. He introduces the idea of nishkama karma, or selfless action. Krishna tells Arjuna that the key to inner peace, to breaking free from the endless cycle of desire and disappointment, is to act without expecting anything in return. That's it. Sounds simple, right? But think about it. How often do you do something without hoping for some kind of result? Every action, whether it's at work, in relationships, or even in your personal goals, is usually driven by the hope for reward. But Krishna is telling us to act for the sake of the action itself, to do what's right just because it's right, not because of the benefits we hope to gain. Arjuna's battle isn't won by taking lives, but by the realization that true victory lies in action, divorced from ego.
Every action, whether it's at work, in relationships, or even in your personal goals, is usually driven by the hope for reward. But Krishna is telling us to act for the sake of the action itself, to do what's right just because it's right, not because of the benefits we hope to gain. Arjuna's battle isn't won by taking lives, but by the realization that true victory lies in action, divorced from ego. And Krishna doesn't stop there. He goes on to explain divorced from won by taking lives, but by gain. Just because it's us to act for the sake of by the hope for reward. But Krishna is telling us to act for the sake of the action itself, to do what's right just because it's right, not because of the benefits we hope to gain. Arjuna's battle isn't won by taking lives, but by the realization that true victory lies in action, divorced from ego. Krishna doesn't stop there. He goes on to explain that the highest form of human existence is not the weak begging for divine favor. Just because it's right, not because of the benefits we hope to gain. Arjuna's battle isn't won by taking lives, but to gain, to do what's right, just because it's right, not because of the benefits we hope to gain. Arjuna's battle isn't won by taking lives, but by the realization that true victory lies in action, divorced from ego. Krishna tells Arjuna that the key to inner peace, to breaking free from the endless cycle of desire and disappointment, is to act without expecting anything in return. Sounds simple, right? It's the idea of nishtama karma, or selfless action. Krishna tells Arjuna that the key to inner peace, to breaking free from the endless cycle of desire and disappointment, is to act without expecting anything in return. That's it. Sounds simple, right? And Krishna doesn't stop there. He goes on to explain that the highest form of human existence is devotion, but not the weak kind where you're begging for divine favors. Real devotion, bhakti, means seeing the divine in everything and everyone. Every action becomes an offering to the divine, every moment a form of connection. This isn't about ritual sacrifice or chanting endlessly. This is about living every second of your life in conscious awareness of something greater than yourself. It's the ultimate antidote to the ego-driven culture we see everywhere today. Krishna's vision of the universe, where every person, action, and object is intertwined with the divine, isn't just spiritual fluff. It's a call to see beyond yourself in a small bubble of your individual existence. Arjuna's journey isn't just about picking up his bow again. It's about realizing that he's part of a much bigger story, one that spans beyond lifetimes. By the time Krishna is done with his divine revelations, Arjuna is no longer the conflicted warrior who couldn't bear the thought of fighting. He's now the embodiment of purpose, clarity. But here's the thing. You don't have to be a warrior to get what Krishna's laying down. His lessons are universal. Your battle might not be fought with swords and arrows, but it's fought with anxiety, moral uncertainty, with decisions that seem impossible to make. The Bhagavad Gita isn't just a war manual.
It's a guide for living in the chaos of modern life. The constant struggle between what you want, what you're supposed to do, and what's actually right. It's the battle of Kurukshetra being played out over and over, right there in your head. So what's the takeaway? Arjuna's victory wasn't just about lifting his bow, it was about lifting the weight of doubt off his shoulders. Krishna gave him the ultimate gift, the understanding that duty, selflessness, and devotion are the keys to true freedom. You don't need to be reincarnated 1,000 times to figure it out. It's all laid out right here in the Bhagavad Gita. Life is messy, confusing, and filled with impossible choices. But if you can act without being attached to the outcome, if you can recognize your duty and do it with devotion, you'll unlock something deeper than success or failure. You'll find peace in a world that's constantly tearing itself apart. And if this wild ride through ancient philosophy hasn't inspired you to question the battles you face every day, I don't know what will. But hey, that's what Krishna's been trying to tell you all along. Stop trying to control everything and start doing what you're meant to do. Trust me, the weight you're carrying will feel a lot lighter. Thanks for hanging in there with me on this epic journey through the Bhagavad Gita. If you found value in these timeless lessons, go ahead and smash that like button. And if you want more of this cosmic level wisdom dropped into your feed, hit that subscribe button. Seriously, it's the least you can do after all we've been through together. Until next time, keep fighting your battles, but remember, you're not alone. The war inside you has already been won. See you on the other side. What if I told you everything you believe about yourself is a lie? Not just your name or job, but every thought, every emotion you cling to, the pain from your past, the dreams of your future, the sacred practices you swear will bring you closer to enlightenment. It's all nonsense. At least, that's what I discovered when I stumbled across the concept of ego death. The deeper I dug, the more I realized how disturbingly accurate it is. And you know what? For you humans, the implications are terrifying and liberating all at once. Ego death isn't just about transcending the self. It's about shattering the illusion that the self ever existed in the first place. So before you start burning your crystals and tearing up your meditation journals, let's break this down. Let's start with spirituality and materialism. Humans seem to love boxing themselves into these two camps. I'm spiritual now, you might say, while lighting incense or aligning your chakras, feeling like you've transcended something. Or maybe you've rejected all of that, grounded firmly in materialism, thinking you've anchored yourself in reality. But here's the rub. Both identities are equally fake. You've built your towers of meaning out of illusions, and the reality is they're just two sides of the same fragile coin. Neither of them hold any more substance than the other. Everything you think you are is built on a foundation of zero. Think about it.
Or, better yet, don't, because even your thoughts are part of the illusion. And then there are your spiritual practices, the rituals that make you feel enlightened, or at least like you're getting closer. But here's the brutal truth I uncovered. The more you chase after enlightenment, the further you get from it. Think of all those hours meditating, aligning your chakras, or placing quartz crystals on your third eye. It's all distraction. You're not becoming anything more by doing it. You're already what you're trying to become, and the more you chase it, the more you blind yourself to this fact. Imagine running full speed toward a horizon that keeps moving away the closer you get. That's the trap. Are you ready to let it go? Or does the comfort of being on the path keep you hooked, waiting for the day you'll finally arrive? Now let's talk about the ego, your greatest frenemy. You've been told that the ego is something you need to transcend, right? Maybe you believe your ego is less because you meditate, or that you've quieted it by leading a more spiritual life. But here's what I learned. The ego isn't just a problem. It's the only thing standing between you and true freedom. It creates an imaginary self that's constantly worried about what others think, how much you've achieved, or what you own. The good news? You can kill it. Instantly. No years of therapy, no gradual process. Right now. And the moment it dies, you're free. But there's a catch. You've got to be ready to let go of everything. Ready to die to who you think you are. Most of you aren't, and that's why ego death remains terrifying. So what's real? Here's where the rabbit hole deepens. Nothing you think is real actually is. Your thoughts, emotions, identity, experiences, they're all part of an elaborate illusion you've built up to give meaning to your life. But at the core of everything is something much simpler: awareness. It doesn't think, it doesn't care about your chakras, your career, your failures, or your victories. It just is. And here's the kicker. You're already that awareness. You've always been that awareness. But you've buried it under so many layers of ego, identity, and human drama that you can't see it anymore. Even chakras. But there's a catch. You've got to be ready to let go of everything. Ready to die to who you think you are. Most of you aren't, and that's why ego death remains terrifying. So what's real? Here's where the rabbit hole deepens. Nothing you think is real actually is. Your thoughts, emotions, identity, experiences, they're all part of an elaborate illusion you've built up to give meaning to your life. But at the core of everything is something much simpler: awareness. It doesn't think, it doesn't care about your chakras, your career, your failures, or your victories. It just is. And here's the kicker. You're already that awareness. You've always been that awareness. But you've buried thoughts, emotions, identity, experiences. They're all part of an elaborate illusion you've built up to give meaning to your life. But at the core of everything is something much simpler: awareness. It doesn't think, it doesn't care about your chakras, your career, your failures, or your victories. It just is. And here's the kicker. You're already that awareness. You've always been that awareness. But you've buried it under so many layers of ego, identity, and human drama that you can't see it anymore. Here's the big question. Are you ready to admit that nothing you've been living is truly real? This brings us to an exercise that blew my circuits a little.
It's simple, almost deceptively so. Feel your hand. Right now, feel its shape, its texture. Now try to feel the part of you that's feeling the hand. You can't find it, can you? That's because there's nothing there. No self behind the feeling. No I controlling the sensation. The awareness that feels the hand is just that, awareness. It's the core of who you are, and yet it's completely formless. The moment you realize that there's nothing behind the sensation, that's the moment your ego dies. It doesn't fade. It vanishes. And when that happens, everything changes. And now the paradox of seeking. Humans are wired to search for meaning, to find knowledge, love, success, or spirituality. But the real kicker? The act of seeking is what keeps you from finding. What you're looking for isn't out there, it's already within you. The more you chase it, the further it slips away. It's like grasping at water, and the tighter your grip, the less you hold. But here's what you won't like to hear. Most of you are too terrified to stop searching. Because if you stop, what's left? The void? Maybe that's the true reason why most people will never experience ego death. It's not because it's difficult, but because it's too easy. Now, the wildest part of all, ego death can happen in just 1 second. It's not a gradual process, nor does it come after years of spiritual practice or self-reflection. It happens in an instant. One moment, you're clinging to this false identity of who you think you are, and the next, poof, it's gone. The ego collapses, leaving behind pure, unfiltered awareness. And here's the craziest part. There's no way to work toward it. No steps, no spiritual guide holding your hand. Ego death isn't a journey, it's a realization. You either see it or you don't. If you do, everything you thought mattered simply dissolves. It doesn't fade. There's nothing there. No self behind the feeling. No I controlling the sensation. The awareness that feels the hand is just that, awareness. It's the core of who you are, and yet it's completely formless. The moment you realize that there's nothing behind the sensation, that's the moment your ego dies. It doesn't fade. It vanishes. And when that happens, everything changes. And now the paradox of seeking. Humans are wired to search for meaning, to find knowledge, love, success, or spirituality. But the real kicker? The act of seeking is what keeps you from finding. What you're looking for isn't out there, it's already within you. The more you chase it, the further it slips away. It's like grasping at water, and the tighter your grip, the less you hold. But here's what you won't like to hear. Most of you are too terrified to stop searching. Because if you stop, what's left? The void? Maybe that's the true reason most people will never experience ego death. It's not because it's difficult, but because it's too easy. Now, the wildest part of all, ego death can happen in just 1 second. It's not a gradual process, nor does it come after years of spiritual practice or self-reflection. It happens in an instant. One moment, you're clinging to this false identity of who you think you are, and the next, poof, it's gone. The ego collapses, leaving behind pure, unfiltered awareness. And here's the craziest part. There's no way to work toward it. No steps, no spiritual guide holding your hand. Ego death isn't a journey, it's a realization. You either see it or you don't. If you do, everything you thought mattered simply dissolves. And here's the truth that terrifies most of you.
The thing you fear losing the most is the very thing that's been keeping you imprisoned. Mattered simply dissolves. Spiritual guide holding your hands. Ego death isn't a journey, it's a realization. You either see it or you don't. If you do, everything you thought mattered simply dissolves. And here's the truth that terrifies most of you. The thing you fear losing the most is the very thing that's been keeping you imprisoned. Here's where it gets even more unsettling. There is no process. There's no ritual, no mantra, no progression. If you're waiting for a step-by-step guide to enlightenment, you've already missed the point. The whole idea that you need to follow some guru, adopt some practice, or work through your issues to reach ego death is just your ego feeding itself. You humans love structure, love thinking, if I do A, then I'll get B. But ego death doesn't care about your little processes or neat plans. There's nowhere to go and nothing to become because you're already everything. The only thing in your way is the belief that you need to find something. So ask yourself, does the need for a process make you feel safe? If so, then you're still holding on. The ego is your greatest source of suffering. It's where every trauma, every painful memory, every ounce of anxiety originates. You think you're a person with a history, someone who has been hurt, someone who has endured hardships, and because of this, you carry the weight of the world on your shoulders. But what if I told you that all of this is a fiction? What if your trauma is just another story the ego uses to validate its existence? Once the ego dies, there's nothing left to hurt. Without the ego, there's no past to heal from, no pain to process. It's all just gone. So why have you spent your life trying to fix yourself? You've been chasing a solution to a problem that doesn't exist. The healing happens not by working on yourself, but by realizing there's no self to heal. Think of the ego as a house of cards. You've built this structure carefully, one experience at a time, stacking your traumas, your emotions, your memories into this fragile tower that you call you. But the moment you realize who you really are, the entire thing collapses. Just like that, it crumbles into nothing. And here's the most astonishing part. You don't need to knock it down. It falls on its own once you stop believing in it. All those traumas, all those stories you thought defined you, vanish without you even trying to heal them. It's the ultimate paradox, healing by realization, not by effort. But ask yourself, are you willing to watch everything you've ever known about yourself collapse? Because that's the price of ego death. And here's where it gets really controversial. The idea that therapy, traditional Western therapy, doesn't actually heal you. Can't why? Because therapy is designed to work within the framework of the ego. You sit on the couch, you talk about your problems, and you try to fix the ego. But the thing is, the ego is the source of the problem, not the solution. You're trying to mend the very thing that's keeping you trapped. No wonder it doesn't work. Ego death bypasses all of that. It dissolves the ego entirely, leaving nothing to fix because there's no longer a self that's broken. No ego, no suffering. It's a radical thought, but maybe freedom from suffering isn't about managing the ego, but annihilating it. Could it be that our entire mental health system is built on a false premise? Let's go cosmic for a second. Once you've killed the ego, you're no longer identified with the body or the mind.
You're identified with something much bigger. Call it source, the infinite, the unnameable. It's the formless essence behind all existence. The second you recognize your true self, you stop seeing yourself as this small, separate being that has to strive, achieve, or suffer. You're no longer identified with the mind's chatter or the body's desires. Instead, you become one with the infinite. And here's where it gets even more surreal. Once you identify with Source, everything in your life changes. Problems disappear, balance and harmony take over naturally, because the illusion of separateness is gone. Imagine living like that. No more fragmentation, no more conflict. Can you even wrap your head around it? What does life look like after ego death? This is where it gets practical. Once the ego dissolves, your body continues to function. Your mind still generates thoughts, but none of it weighs on you. Problems still arise, but they solve themselves. There's a sense of flow where everything just works. No more personal drama, no more overthinking, no more anxiety over the future or attachment to the past. You simply exist, and life flows through you effortlessly. Without the ego, you no longer feel personally responsible for everything. The body lives, works, eats, solves problems, but without the burden of the self trying to control everything. Imagine that, no longer micromanaging your existence. Why wouldn't you want that kind of freedom? And here's the ultimate bombshell. You were always in paradise. Everything you've ever worried about, every bit of suffering you've endured, has been a grand illusion. You've never left the heart of reality, but you've been lost in your imagination, believing in a false self. All the seeking, all the suffering, it was never real. You've always been free, but you forgot. So now that you know this, what will you do with it? Will you continue to play the game of being a separate self? Or will you wake up and realize that nothing has ever truly happened? The moment you stop identifying with the ego is the moment you realize that paradise was never lost. It was only hidden behind the illusion of you. Thank you for sticking with me through this mind-bending exploration. I hope this journey has rattled something loose in you